Welcome to my channel again. Good morning to all. How are you? And I am fine. Okay, just I am telling in advance. I am fine. And how are you? Hope you are all fine also. So, good morning to all my subscribers and those who are actually viewing my channel regularly, and those who are actually participating in uh, in various lectures, whatever was completed. And thank you so much that you are giving me a lot of supports and a lot of encouragement to actually to make new videos. And that's why actually just I am very much glad to see that various comments is coming from the various sources, various students also. So I'm very much glad to see you here, that you are giving me this kind of encouragement to make my videos more and more useful for the students as well. So here I think in our last video, in our last video we had solved 2-3 questions, I think. Okay, so in this video just we will cover these questions as well. Okay, this question as well. 5 questions are there, you can see. One by one we will solve these questions as well, and very important questions. These are very important for the entrance studies and for the board as well. Okay, for CBSE. This type of questions are very important also for the board standard and for the entrance standard also. Okay, not all the questions, some questions, 2-3 questions are entrance standard and the board standard as well. So we are going to solve the most important questions from the function chapter as well. So in our last video that we had discussed various concepts and various things. How could you solve, how could you get the idea that this question, this function, this given function is 1 this given function is onto, and how can I get, how can I prove this oneness and ontoness property, and for that what type of algorithm should be followed, all the things were discussed. Okay, so here also the same thing will be happened. So here just you can write the questions as well. You can write the questions here. So we have collected this questions. Okay, so one by one we will discuss this question as well. Now you can see the questions here. Just write down the questions first, and after that one by one we will discuss. Okay, here the first question is, this one. Check. Okay, so check fx equals to mod x. Very important question it is. Okay, fx equals to mod x. Is it bijective function? Is it bijective? Just you have to check whether it is bijective or not. Okay, so that means here, and what is the domain set here? That means what is the input set? The real number set, you can see, real number set, and obviously the output set will be the real number set as well. Okay, so this is the short form of the question actually. Okay, so here the function you can write also, function f such that r to r. Okay, so your input set is r and output set is also r. So here fx equals to mod x. Fx equals to mod x for all x belongs to r. That means from the real number we have to choose all the input values. Okay, now oneness property. Now here you can see what is the modulus function. Okay,
what is the modulus function as well. Okay, just you can see. Do you know the definition of modulus function? Right? Yeah, fx equals to mod x. Okay, so mod x equals to plus x minus x when x greater than 0 and x less than 0. So that means whenever the greater than 0 values of x will be chosen, then the answer will be plus x. And when the less than 0 value, that means minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, this type of values will be chosen, then the answer will be the minus x as well. Okay, so here just see what is happening here. So here, if x equals to 2, if x equals to 2, so fx equals to mod of 2, answer is what? 2. Okay, x equals to minus 2, so fx equals to mod of minus 2 equals to answer is 2. So here you can see that in the modulus function, whatever the value of the input will be chosen, the ultimate answer will be positive. You can see in the modulus function, actually just we know very well that if you use the mod function, that means what? Whatever the value of the input it is, just the output will be the positive value. Here you can see the 2 and minus 2, whatever the value it is, just you have put the value here in the modulus function, then the answer is becoming a positive number. So here the input values is 2 and minus 2 input values, but the output is same. That means here if we take 2 and minus 2, output is 2. That means, is it a 1 function or this many one functions? So here you can see that here for the multiple values of x belongs to R, fx value is fixed. So f is not 1. Clear? F is not 1. Okay. Now for the ontoness property. As you can see, the ontoness property. Here the input set and the output set both are real number set. So that means all the real numbers belongs to this set. And here also the output set is also real number. That means all the real numbers belongs to this set, second set also. So here for the ontoness property, in ontoness, what should I check here? We have to check in the second set. Just listen very carefully. In the second set, is there any element left which has no mapping with the input set? So that means we have to find the value of y or fx, whatever it is, in the second set. For that, we are not getting the value of x here. Okay, so just listen very carefully what I am telling. Here in the modulus part, if you choose the positive value as well as the negative value of x, the ultimate answer of plus x and minus whatever it is, ultimate answer will be positive. Am I right or not? Right? यहाँ पर अगर जैसे suppose let us choose some values, minus 1 plus 1, minus 2 plus 2, minus 3 plus 3, minus 4 plus 4. So real number set चलता रहेगा ऐसे. Okay? Now here the same set, this is the real number set, the same values will be there, minus 1, 1, minus 2, 2, minus 3, 3, minus 4, 4, dot. It will be continued, okay, up to infinity. So here, just you can see, if you choose x equals to minus 1, answer is 1. Modulus function, you can see x equals to minus 1, that is mod of x equals to mod of minus 1, answer is 1. If you choose plus 1, answer is plus 1 as well. If you choose minus 2
plus 2, plus 2, plus 2. If you choose minus 3, plus 3, 3. If you choose minus 4, plus 4, answer is fixed at 4. Okay. So here you can see that in the first set, no need to consider this first set here. Just you have to see, you have to check, is there any element in the second set left which has no mapping, which has no relation with the input set. Here you can see, clearly we can see this type, all the negative values have no mapping with the input set. Here you can see all the negative values are going to be left, which have no pre-image, which have no mapping with the first set as well, which have no bonding with the input set as well, whatever you can say. So here minus on all the negative values in the second set are left, which has no pre-image, which has no mapping. Just you can write this statement here. Here all the negative values, all the negative values of the second set are left, which have no mapping with the first set. So if some elements, if at least one element is left in the second set, then this function will not be onto, I think it will be into function. Just see the definition here. Okay, so just see the lecture number 1. So here f is not onto, am I right? So here f is not onto, so f is not on 1, f is not onto, that means what? F is not bijective as well. So f is not bijective as well. F is not bijective. Very simple. Okay. So here you can see this is the very important question for the board standard. So 4 marks के लिए बहुत important है इस type of questions. Okay. So हो गया है, कोई डाउट है तो अगर तो पूछना, ठीक है. Modulus function, that means what? Whatever the value of x we can put, but the outcome will be positive. So that means what? Outcome will be positive, output will be the positive values. So that means here all the negative outputs will be left, which have no pre-image, which have no mapping with the input set. So here you can see all the negative values are left in the second set, which has no mapping. That means this is not onto. According to the ontoness property, at least one element, if at least one element is left in the second set, then it will not be onto function. Here the infinite number of negative numbers are left, which have no pre-image, which have no mapping. That means this function is not onto as well. Our second question. Second question is what? Second question. Fx equals to box of x. Just in the bracket, greatest integer function. Okay, and for all x belongs to a real number. This is the function as well. Okay, x belongs to real number. Now fx is a greatest integer function. The definition was written. Okay, so greatest integer function, whenever this box will be used, this box, what is the actually effect of this box? Right? So if I use this box, that means what? Whatever the value of x, it may be decimal number, it may be integer number. Okay, so you can put in this inside this box, but the output will be the integer value.
output will be the integer value. Just see the lecture number 1 properly. Okay, here I think there I had discussed this greatest integer and the smallest integer function elaborately, okay, with the proper example as well. Okay, so here you can see 1-1s. Let us choose this 1-1s. 1-1. Okay, fx equals to what? Box of x. Very good. Greatest integer function, that means what? Less equals to x. You can see the greatest integer function always less equals to x. So now if x equals to, just choose 1.25, suppose. So box of 1.25 will be, what will be the answer? Just you can see, if you have the decimal number, at first we have to select two immediate integer number. Here you can see 1 and 2. 1.25 is lying between these two integer numbers. So in the greatest integer function, the answer will be this one. So answer is 1. X equals to 1.50. 1.5. Answer is same. 2, 1. Answer is 1. If you choose x equals to 1.75, 1.75, answer is 1. Here you can see, for the multiple values of x, we are getting the fixed value of fx. That means output is not changing as well. For the multiple values of x, the output values are not changing. That means what? This is not on 2. Sorry, 1-1. This is not 1-1. That means here you can see this is the first set, second set. It is what? 1.25, 1.5, 1.75. But answer is 1. For every number, for every input, answer is fixed. That means many 1. So f is not 1. Very interesting question. Very conceptual also. Okay. So this mod function and this box function related questions are very, very important for the entrance studies also. Okay, so just keep all the concepts regarding this mod and the box as well, just in your mind. Okay, whenever it will be required, then just you can use. So then ontoness property. Okay, सब पेन पेपर में लिख रहे हो ना, सब नोट कॉपी बना रहे हो. अगर तुमने नोट कॉपी अभी तक नहीं बनाया, just prepare the note copy first. Okay, just all the concepts and all the things and all the questions, all the solutions have to be there. Okay, and have to be solved also. Okay, in that note copy. So here, ontoness property. So here fx equals to what? Box of x. This type of question actually in this lecture number 2, the process whatever I followed in that lecture number 2, in this kind of questions, mod and box functions, in this kind of questions we cannot use those type of algorithms and steps. Here theoretically you have to solve this type of questions, mod and box of x. Okay. If you have any polynomial, okay, then you can use that kind of process. Okay. So here x belongs to the real number. Now just you can see these two sets are, and both are real number set. Okay. So just let me choose some numbers here. 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 3.75. यहाँ पर भी 1, 1.25, 1.5, सेम सेट है ना दोनों, सेम एलिमेंट्स रहेगा, है कि नहीं? सेम सेट ही है दोनों. तो रियल नंबर में तो बहुत कुछ होता है, तो हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने चूज किया. सब एलिमेंट्स तो लिखना यहाँ पर पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है. तो दैट मीन्स अब तुम यहाँ पर क्या फंक्शन यूज करो? बॉक्स फंक्शन यूज करो. यहाँ से तुम x का वैल्यू चूज करो. सपोज x का वैल्यू 1, तो बॉक्स ऑफ 1 का आंसर क्या होगा?
जब भी कभी भी if you are using any integer value inside this box, then answer will be same. That means box of 1, answer is 1. Box of, क्योंकि 1 and 2 they're actually integer itself. Okay, तो वो लोग तो integer ही है और integer में क्या convert करें उसको, ठीक है. So that means जैसे box of 2, answer is 2. Okay. So here if you are using x equals to 1, so box of 1, answer is 1. That means this one. 1.25, box of 1.25. तो इसका आंसर क्या होगा 1.25. मुझे देखना है कौन सी दो इंटीजर के बीच लाई करता है, तो ये लोएस्ट वाला जो होगा वही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर. तो दैट मींस इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1 हो गया है कि नहीं. फिर 2 का आंसर भी 2, 2.25, 2.75 सब. इसका आंसर भी क्या होगा 2 ही होगा, है कि नहीं. 3 का आंसर भी 3, 3.5 का आंसर भी दिस है कि नहीं. देखो है. सो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं सेकंड सेट में क्या कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा है जिसका कोई भी मैपिंग नहीं है. ऐसा है क्या. देखो सेकंड सेट में हजारों एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गया. देखो जो डेसिमल नंबर्स हैं वो सब एक्स्ट्रा रह गया जिसका कोई मैपिंग ही नहीं है कि नहीं. तो दैट मींस सेकंड सेट में ये जो डेसिमल नंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा रह जाएगा सेकंड सेट. क्यों. क्योंकि इफ यू आर यूजिंग दिस बॉक्स मीन्स what is the actually effect of using this box here. If you are using this box, that means whatever the value of x can be plotted inside this box, but the output will be integer. So here the output set is. So here the outputs will be the integer. Here you can see 1, 2, 3 integers is coming, but all the decimal numbers are left. Those who have no mapping with the input set as well. So here you can write here now all the decimal numbers are left in the second set which have no mapping. So f is not on top. So here you can see f is not on 1, f is not on 2. That means what? F is not bijective. So f is not bijective. Is not bijective as well. हो गया. तो यहाँ पर देखो f is not bijective है. वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सो बहुत गर्मी है. सो यहाँ पर देखो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया. ओके. अब थर्ड क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो. थर्ड क्वेश्चन हो गया. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछना. वेरी सिंपल है. वेरी सिंपल solution is just see the structure and this should be drawn. So this picture is very important. Just after seeing this picture you will be cleared that no, whatever sir is telling, that is the main thing, that on the basis of this picture sir is telling whatever it is. Okay. So now the third question. Third question अब बोलो थर्ड क्वेश्चन क्या है. यस, द थर्ड f such that n to n. Okay, fx equals to x square plus x plus 1. So here the input set is natural number, output set is also a natural number. Now here I can see the fx is the polynomial. Now you can use that process. Okay, x1 and x2. Now 1 1s property. Now we are going to check whether it is 1 1 or not. Let x1 comma x2 belongs to the natural number set because the input set is natural number. Okay, so for that two inputs fx1 and fx2 both are same. Just we are assuming
the output is same. Just see the lecture number 2 very carefully. fx1 means what? x1 square x1 plus 1 x2 square plus x2 plus 1. Okay, so you can see 1 cancel. x1 square minus x2 square plus x1 minus x2 equals to 0. There is x1 minus x2, x1 plus x2, and here x1 minus x2 as well. Now if you are taking common from these two different terms, I think x1 minus x2 and 1 plus x1 plus x2. So here you can see two factors are there. If you want to get this x1 minus x1 equals to x2, because 1 we have to check. For that, this should be not equals to 0. This term should be not equals to 0. Because without getting this concept, we cannot write here x1 equals to x2. So we have to check whether it is not equals to 0 or not. Okay. Here you can see x1 and x2. From which set these two values belong? I think natural number set. And natural number set means what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the positive values. So that means यहाँ पर x1 and x2 positive values होगा, क्योंकि natural number से मुझे choose करना है. देखो, that you can see. So अगर मैं x1 और x2 का यहाँ पर positive value choose करूँ, ये part कभी भी 0 आ सकता है. बीच में तो plus sign है, सब कभी भी 0 आ सकता है. I think it is not possible. So just you have to write this line. Since 1 plus x1 plus x2 not equal to 0 for all x belongs to natural number, so x1 minus x2 equals to 0. If एक फैक्टर अगर 0 नहीं हुआ, 0 के साथ इक्वल नहीं होगा, दूसरा फैक्टर तो बेसिकली 0 के साथ इक्वल होगा. बेसिकली लास्ट दिन भी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है. सो वहां पर देखो x1 equals to x2. That means f is 1 1. F is what? 1 1. Alright? So उसके बाद जो ontoness है, ontoness प्रॉपर्टी में जाओ. ontoness में जाओ. onto. Now for onto, fx equals to what? X square plus x plus 1. That is y equals to, this fx can be written as y also. X square plus x plus 1. So here you can see in the last question and the last video that we have solved this type, we have discussed this kind of concepts here. This is the quadratic formation of x. So x square plus x plus 1 minus y equals to 0. So y will behave like a constant here. Okay. So if you have any quadratic formation of any particular variable, then the another variable will be the fixed. So that means here the quadratic formation. So 1 minus y, this part is constant here. Now you can use the quadratic formation. देखा ये जैसे quadratic formation means quadratic formula. Okay. And the quadratic formula is what? Minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a. So यहाँ पर minus b, that means minus 1, x का coefficient plus minus 1 square minus 4 into a into c means 1 minus by 2 into a means what? The coefficient of x square. So here you can see minus 1 plus minus root over 1 minus 4 minus minus plus 4y by 2. That means minus 1 plus minus root over 4y minus 3. Okay, by 2. Now यहाँ पर क्या आ गया? X equals to. Now we have to choose the values of y from the natural number set. That means all the positive values. Okay, output set is also natural number. So here you can see the values of y will be started from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay,
तो यहाँ पर अगर मैं y के जगह 1 से शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इंफिनिटी, साथ में 4 मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू दैट पार्ट, वो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या 3 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा? एक तो ही ये 4 का मल्टीपल है, ऐसे ही ये 3 से ग्रेटर है, उसके ऊपर यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो सब पॉजिटिव वैल्यू तुम चूज कर रहे हो, ठीक है? तो पॉजिटिव वैल्यू अगर चूज करो दैट मीन्स 4 इंटू एनी पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स 3 से तो वो ज्यादा ही होगा। सो 3 से अगर ज्यादा हो तो ये जो ब्रैकेट में, ये जो रूट के अंदर जो टर्म है, कभी भी उसका आंसर नेगेटिव आ सकता है? आई थिंक नेगेटिव कभी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर y का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू चूज कर रहे हो, तो 4 का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव वैल्यू चूज करोगे, दैट मीन्स व्हाट 4 इंटू एनी पॉजिटिव वैल्यू 3 से वो ग्रेटर ही होगा, दैट मीन्स रूट के अंदर कभी भी यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ओके, सो दैट मीन्स इफ नेगेटिव नंबर इज नॉट कमिंग, दैट मीन्स दिस रूट ओवर टर्म will be the real number as well. If the negative number would come, then what? It would be the complex number as well. And according to the, and x would be the complex number. This part is complex number, that means the whole part is complex number. So here you can see the input set is the natural number set. So the complex number would not come. So if the complex number wouldn't come, then what? That was not this onto function. But here you can see the value, all the values of y from the natural number, this root over term will never be negative, that will be positive as well. So if this positive number is coming, that means the whole part is the real number. Okay, but here we can see natural number x, the input values will have to be a natural number, not the real number. So then after that, just you can see here, if I choose y equals to suppose 1, if I choose y equals to 1, that is what? 4 minus 3, that is 1, root 1, answer 1. In the middle, plus minus sign is there. Just you can see, you can check here. Okay, let us check what is happening. Very interesting question is. Okay, just what is coming here? X equals to minus 1 plus minus 4y minus 3 by 2. Okay, so just let us choose that y equals to 1. Okay, so x equals to minus 1 plus minus root over 4 into 1 minus 3 by 2. There is minus 1 plus minus root over 1. Okay, by 2. So root over 1 means what? Minus 1 plus minus 1 by 2. Okay. Okay. So here you can see minus 1 plus minus case is there. That means 2 cases will be there. That means plus minus 1 plus 1 by 2 and minus 1 minus 1 by 2. So here 0 by 2, answer is 0. And minus 2 by 2, answer is minus 1. 0 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, माइनस 1 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता. दैट मीन्स x का वैल्यू जो आ रहा है आफ्टर यूजिंग y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 तो हम लोग चूज कर सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? यही तो सेट दिया हुआ है. y का वैल्यू तो 1 यहाँ पर चूज कर सकते हैं. तो आफ्टर यूजिंग दिस 1, whatever the values is coming of x here, just you can see 0 and minus 1. That means what? 0 not belongs to the natural number set. Minus 1 also not belongs to the natural number set. So that means the values of x is not coming in the mentioned set. Okay. So for this particular value of y equals to 1, x value is not coming. That means what? This y equals to 1 will be left in the second set, which have no mapping with the input, because input is not coming in the set. क्योंकि 0 और minus 1 तो नेचुरल नंबर सेट में तो है ही नहीं. तो ये जो सेकंड सेट में जो ये y का वैल्यू 1 रह जाएगा, 1 किसके साथ मैपिंग बनाएगा, किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा?
है कि नहीं? तो दैट मींस यहाँ पर ये अगर वैल्यूज नहीं आ रहा है, दैट मींस व्हाट, ये y इक्वल्स टू 1 एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिसका कोई भी मैपिंग इनपुट के साथ नहीं होगा, ठीक है? सो हियर वी कैन सी फॉर, जस्ट यू कैन राइट for y, here you can see for y equals to 1, the values of x is not coming in the natural number set. So f is not onto here. Okay, just you have to write the statement here. For y equals to 1, x doesn't belongs to the natural number. So f is not onto. F is not onto. F is not onto. So f is 1 1. Very good. But f is not onto. That means what? F is not bijective. F is not bijective as well. So just write the statement. So f is not bijective. F is not bijective because f is not onto function as well. So the overall function will not be bijective function. Okay. The next question is, just write the next question here. You can see the next question is for f such that r to r, okay, and fx equals to x cube minus x. ओके, सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोगों ने किया है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे हम लोग ये दिस वननेस एंड ऑननेस हम लोग दिखा सकते हैं, वो हम लोग अभी चेक करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल जो है उसको हम लोग ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में नहीं कर सकते, उसके लिए अलग सा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? देखो यहाँ पर let for the oneness property, okay, x1 x2 belongs to real number. Let fx1 equals to fx2, okay, so fx1 equals to fx2. so यहाँ पर x1 cube minus x1 x2 cube minus x2, okay, so यहाँ पर x1 cube minus x2 cube minus x1 plus x2. And I have taken all the numbers, all the elements at one side, on the left hand side. So यहाँ पर x1 cube minus x2 cube, a cube minus b cube formula, a cube minus b cube formula. What is the formula here? A minus b a square plus ab plus b square. So यहाँ पर x1 minus x2, okay, और यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस, ये दोनों में से माइनस कॉमन, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. सो ये x1 माइनस x2 उसमें आएगा, कॉमन ले लेता हूँ, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. हो गया, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, दो फैक्टर मिल गया, अब मुझे चेक करना है ये क्या नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये जो वैल्यू है वो क्या कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, वो मुझे चेक करना है. अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो बस ठीक ही है, यहाँ पर हम लोग प्रोसीड करेंगे. यहाँ तो यहाँ पर बोलो ये जो पार्ट है ये कभी भी 1 के साथ इक्वल हो सकता है, इसका वैल्यू कभी भी 1 के साथ इक्वल होगा, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है तुम्हें है 1 के साथ इक्वल होगा, वो तुम्हें चेक करना. अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, और उससे पहले मुझे चेक करना है कि इसका वैल्यू क्या 1 होगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये थोड़ा चेक है, तुम करो x1 और x2 का डिफरेंट वैल्यू चूज करो, जो मन में आए चूज करो, क्योंकि रियल नंबर ही है यहाँ पर. ओके, तो चेक करने के बाद
हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये कभी भी ये जो वाला जो पार्ट है वो कभी भी 1 नहीं आएगा, कभी भी 1 यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि x1 स्क्वायर ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर है, कोई भी वैल्यू पुट करो दोनों पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, पॉजिटिव नंबर ये दोनों पॉजिटिव प्लस करके जितना होगा ये भी प्लस है, इसमें x1 और x2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली दो स्क्वायर नंबर का जो एडिशन है उससे ये छोटा ही होगा, क्योंकि 1 कभी नहीं होगा, इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। ओके, तो तुम लोग चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो x1 x2 का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू तुम लोग चूज करो करके ये देखो 1 आता है कि नहीं। मैंने तो वेरीफाई कर लिया। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद मैंने ये देखा है कि ये इस पार्ट का आंसर कभी भी 1 के साथ इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये पार्ट इक्वल नहीं आया 1 के साथ, दैट मींस ये पूरा पार्ट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, सिंस x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर -1 never equals to 0, never equals to 0, so x1 minus x2 equals to 0, so x1 equals to x2, ये हो गया तुम लोगों का 1 1 टोटल। so f is 1 1, so f is 1 1 हो गया। तुम लोग चेक कर सकते हो इस चीज का आंसर कभी भी 1 आ सकता है कि नहीं है? तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं तुम लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर x1 और x2 का डिफरेंट वैल्यू तुम चूज करो, जो भी मन में आए चूज करो करके देखो, ये कभी भी ये 0 आता है तो ठीक है, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। अगर 0 नहीं आता है तो ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद ऑन टू, तो दैट मींस x1 इक्वल्स टू x2, दैट इज f is 1 1। अब आते हैं हम लोग ऑन टू, ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं कि ऑन्टोनेस क्या होता है। onto, okay, so fx equals to what? Fx equals to x cube minus x, so there is y equals to x cube minus x. So here this part is cubic polynomial of y, सॉरी x। तो यहाँ पर ऐसे ही लिख लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक, ये अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है और क्यूबिक पोलिनोमियल में हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है कि इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल देयर विल बी एटलीस्ट 1 रियल रूट। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 रूट होता है, तो 3 रूट में से कोई भी एक रूट रियल नंबर होगा, बाकी 2 इमेजिनरी हो सकता है। ठीक है, लेकिन तीनों इमेजिनरी कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ओके, एटलीस्ट 1 रियल रूट रहेगा। ये हम लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ एनीथिंग। ओके, सो यहाँ पर एटलीस्ट एक रूट जो है वो रियल नंबर में रहेगा और बाकी दोनों इमेजिनरी हो सकता है या फिर तीनों ही रियल नंबर हो सकता है। ओके, बट एटलीस्ट रियल रूट तो रहेगा, 1 रियल रूट रहेगा। सो यहाँ पर ये लाइन लिखना है, as we know a cubic polynomial have at least 1 real root, so let real root जो है हम लोग चूज कर लेते हैं, क्योंकि x का यहाँ पर 3 वैल्यू है, तो x के 3 वैल्यू में से एनी वैल्यू एटलीस्ट 1 वैल्यू इज रियल, दैट इज x इक्वल्स टू बीटा चूज कर लेते हैं। ये रियल वैल्यू जो है एटलीस्ट 1 रियल वैल्यू जो है वो बीटा होगा, दैट इज तो y इक्वल्स टू बीटा क्यूब। अगर मैं x के जगह पुट करूं, कर सकते हैं, पोलिनोमियल है तो ये जो जीरोस या फिर रूट्स निकलेगा वो रूट्स x के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बीटा तुम बोल रहे हो, बीटा क्या वैल्यू है? रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। देखो बीटा तो रियल वैल्यू है, क्योंकि एटलीस्ट 1 रियल रूट ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है, एटलीस्ट 1 रियल रूट। सो एटलीस्ट 1 रियल रूट मतलब क्या है, वो हम लोगों ने चूज कर लिया कि एटलीस्ट 1 रियल रूट जो है वो बीटा है। तो ये बीटा हम लोगों ने क्या है, इस इक्वेशन में हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद क्या, y इक्वल्स टू बीटा क्यूब।
तो अब बोलो बीटा अगर यहाँ पर बीटा अगर रियल हुआ, बीटा क्यूब क्या होगा, रियल वैल्यू होगा, ऑब्वियसली होगा। बीटा भी रियल वैल्यू है तो दोनों रियल वैल्यू का माइनस जो है वो भी रियल वैल्यू होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है वो भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स y का वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द आउटपुट सेट इज ऑल्सो द रियल नंबर सेट, इनपुट सेट इज ऑल्सो द रियल नंबर सेट। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये x का जो रियल वैल्यू है हम लोगों ने चूज कर लिया है, इनपुट वैल्यू हम द रियल नंबर बीटा। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते, और y का वैल्यू भी देखो रियल नंबर में निकल गया। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स f is onto, f is onto। दैट मीन्स यहाँ पर निकला, देखो यहाँ पर ये 1 1 भी मिल गया, onto भी मिल गया। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स f is bijective, so f is bijective। Just write the last statement, f is bijective। So that means whenever you will get this cubic polynomial, that means the 1 1 this property will be the same। Just you have to verify this part, this part is most important part, you have to verify whether it is not equals to 0 or not। Okay, so here we can see two square number addition, okay, obviously greater than this part, okay, obviously it will be greater than this part। So if this part is greater than this part, this answer will never be 1। So इसका आंसर कभी 1 नहीं आएगा, कभी भी 1 नहीं आएगा उसका। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक फैक्टर अगर नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ तो दूसरा फैक्टर तो ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि दो फैक्टर था यहाँ पर 1 1 में, इसमें तो दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली 0 होगा। तो हम लोगों ने वहां से 1 1 प्रूफ कर लिया। और किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन आए, ऑन्टोनस प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे ही सोल्व करोगे तुम, उसका कोई अलग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो उसको तुम ऐसे ही सोल्व करोगे, ये एंट्रेंस स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करोगे तुम बीटा क्यूब माइनस बीटा, सो दैट इज हियर f is onto, ओके। सो f is bijective as well, हो गया। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन शायद, नो फिफ्थ, लिख लो क्वेश्चन फिफ्थ। f such that q minus 3q and fx equals to 2x plus 3 by x minus 3। तो here x1 comma x2 belongs to q, so fx1 equals to fx2। q क्या सेट है, रेशनल नंबर सेट। रेशनल नंबर क्या है, which number can be formed as p by q, okay, where q not equals to 0, okay, those number is called the rational numbers। So f of x1 that means what, 2x1 plus 3। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, जहां तक मुझे याद है, 2x2 plus 3 by x2 minus 3। Now diagonal multiplication, diagonal multiply 2x1 plus 3, diagonal multiplication x2 minus 3 and x1 minus 3, 2x2 plus 3। So multiplication 2x1 x2 minus 6x1 plus 3x2 minus 9 equals to 2x1 x2 plus 3x1 minus 6x2 minus 9। हो गया। अब यहाँ पर देखो 2x1 x2 कैंसिल, -9 कैंसिल। सो यहाँ पर देखो minus 6x1 plus 3x2 minus 3x1 plus 6x2 equals to 0। That is minus 9x1 equals to minus 9x2। Minus cancel, 9 cancel, that is x1 equals to x2 that we have got। So f is 1 1। So f is 1 1, okay।
सो उसके बाद ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे। ये लिख लो, एक तरह से देख लो, देख के लिख लो। ओके, ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी, ऑन्टो, ठीक है, ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी, ऑन्टोनेस ऑन्टो। ऑन्टोनेस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो y सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू 2x plus 3 by x minus 3, y equals to 2x plus 3 by x minus 3. This type of questions I've solved in our last video also, and in that video I had told you that if this type of fraction type of functions used to be given, then you have to see the numerator x term. Numerator x term. The numerator x term, as you can see, twice x is there, and the coefficient is 2 plus 2 plus 2. Just you have to add minus 2 on both sides. Minus 2 on both sides. Why should I add this minus 2? Because we have to cancel this numerator x term by crook or by crook. Okay, so ये अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर का जो एक्स का टर्म है उसको कैंसिल करना चाहूँ, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर बोथ साइड माइनस 2 ही ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो y minus 2 equals to, if I take the LCM here, 2x plus 3 minus 2x plus 6. So there is y minus 2 equals to twice x cancel, 9 by x minus 3. Now take the reciprocal on both sides, 1 by y minus 2, x minus 3 by 9. Okay, so x minus 3 equals to 9 by y minus 2. So x equals to 9 by y minus 2 plus 3. X equals to y minus 2, 9 plus 3y minus 6. X equals to 3 plus 3y by y minus 2. Here you can see the whole expression is converted into the y expression as well. In the beginning, that was the expression of x. Now you can see all the expression is converted into the y term. Now you can choose the values of y. Here you can see that you cannot choose y equals to 2 here. You cannot choose y equals to 2. Okay. So if you cannot choose y equals to 2, that means if you choose 2 here, 2 minus 2, answer is 0. Answer is what? Answer is what? 0. So 0, if this 0 something by denominator 0, that means x will be undefined. Okay, so you cannot choose y equals to 2 here. Now you tell me, this rational number set is given. Rational number set is given. Now you tell me, 2, is it a rational number? 2, is it a rational number? I think 2 is a rational number. Okay. 2 is also a rational number. Okay, so that means you cannot choose here y equals to 2. So that means what? For y equals to 2, we will not get the value of x here. Am I right or not? Just see the structure and just tell me, is it right or not? That means if I choose y equals to 2 here, that means something by 0. That means the whole expression will be undefined. Okay, so x value is undefined here. So for y equals to 2, but x value cannot be undefined for any particular value of y. But here it is coming. So for y equals to 2, there will be no mapping with the input with x. Okay, so this function is not onto. Okay, so you have to write the statement here. For y equals to 2, for y equals to 2, for y equals to 2, x doesn't belongs to the real number. Sorry, x is undefined. Undefined.
So f is not onto. So f is not bijective. F is not bijective. 1 तो हो गया लेकिन onto नहीं हुआ है. ठीक है, that means f क्या है, बाइजेक्टिव नहीं हुआ है कि नहीं. तो that means यहाँ पर पहले हम लोगों ने 1 ने प्रूफ किया, x1 और x2 दो वैल्यू लिया है, जो हम लोगों ने fx1 और fx2 दोनों के इक्वल लिया है. लेने के बाद देखा था कि x1 इक्वल्स टू x2 निकला. दैट मीन्स व्हाट, f is 1 1. Okay, after that for the ontoness property we had done a lot of algorithms, a lot of steps. After getting all the steps, just we had discovered this part, and after getting this part, we had seen that if we choose y equals to 2 here, the value of x is going to be undefined. So the value of x should be definite value, not an undefined value. Okay, so for y equals to 2, we are not getting the value of x here. So that means in the second set, y equals to 2 will be left, which is no mapping with the input. Okay, so if for some particular value of y, we are not getting the value of x. अगर कोई भी y का जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसके लिए अगर मैं मुझे कुछ x का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिला, दैट मीन्स क्या है, वो x और y के बीच कोई भी मैपिंग नहीं है. तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि y का वैल्यू 2 के लिए x का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स क्या है, y का वैल्यू 2 जो है उसके लिए कोई भी मैपिंग नहीं होगा. सो दैट मीन्स f is not onto here. onto होने के लिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y x का वैल्यू होना ही चाहिए. तो यहाँ पर x का वैल्यू तो नहीं है, दैट मीन्स दैट इज नॉट onto. So f is not bijective as well. Is the last statement. So I think this 5 question was given, and this 5 question is discussed. Okay, so after solving this type of questions, I think you have got little bit confidence on the function chapter as well, and this related to this bijective property. Okay, you will get a question as well. Actually, and the function will be given, which will be given in your exam, that will be like that. Okay, so we'll solve the different questions from the function as well. Okay, just this is the beginning. Just we'll solve different questions from very interesting questions from these are all the interesting question as well. So in this video, just these 5 questions are done, and that should be practiced well. After practicing these questions, we will move to the next part of this function. Okay, the next phase of this function. Okay, so then there we will discuss different types of questions as well. Okay, so here actually some our subscribers, Sharmina Parveen, I think she is giving me a lot of applause, and thank you very much. And Arman Khan, I think his name, is actually giving the feedback, very good feedback. I am very much glad to see this thing, these messages from your side, that I am actually I am able to make you understand about the concepts and about the very interesting and very conceptual structures, relational function, very conceptual and very interesting also. Okay, 10 marks will come from this chapter. Okay, so we will solve the different questions again, and up to this solution we have to stop here. Okay, so just we will meet again in our next video. Until then, stay healthy and stay safe. Okay, and just stay at home, and please subscribe my channel Mathematics Icon, myself Ovik Roy, and push the bell icon as well, and like button. Okay, Jai Hind.